Algal fossil. Now, algae, as we know, are the primary producers in any aquatic ecosystem. Maybe it is marine or freshwater. But in this topic, algal fossil, I'll be discussing about some basic facts about algae. What are the algal fossils according to family? Algal fossils that are found during the geographical time scale. What are stromatolite, oncolite, rhodolites? The techniques that are used and the cause of decline of algal fossils. Now, hello friends, I am Mayantika. We'll be discussing some basic facts about algal fossil. Now, the study of algal fossil is called paleophycology. Now, why do we need to study paleophycology? Paleophycology is basically studied to understand the ancient environmental condition. For example, ancient say for Paleolithic time में, pre-Cambrian time में, बहुत पुराने ज़माने में वाटर कंडीशंस कैसे थे, उसकी टेम्परेचर कैसी थी, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स थी उसमें, और उसमें डिजॉल्व्ड गैसेस क्या क्या थी, ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू स्टडी paleophycology, and this understanding, this study of the ancient environment is called paleoecology. Algae फॉसिल से हम लोग को पुराने ज़माने की जो इकोसिस्टम थी, like what are the primary predators that are feeding on these algae, इससे पता चलता था कि पुराना इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता था. This is called paleobiology. From the study of this algal fossil, we can also find many other things like age of rock क्या थी, फिर where are the ancient shorelines or ancient oceans located, which is called biostratigraphy. Now, जो पुराने algal fossils थे, they are mostly ichnofossil और trace fossils. अब ichnofossil और trace fossil क्या है? These are not so well preserved like the body fossils, and as they are just mere impressions on the substratum, so we don't get much information from the trace fossil or ichnofossil in comparison to the body fossils. Body fossils जनरली क्या हार्ड स्ट्रैटिफाइड जो बोन वाला पोर्शन होता है उसका मिनरलाइजेशन के चलते जो फॉसिल बनता है वो बॉडी फॉसिल होता है, उसकी इंफॉर्मेशंस पे ज़्यादा रहती है, लेकिन बट मोस्ट ऑफ द एल्गर दे हैव गॉट सॉफ्ट बॉडी, लाइक ओनली उसकी सेल वॉल में ही कुछ कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका रहती है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एल्गीज की ही फॉसिल्स बनती है. अब कैल्शियम कार्बोनेट रोडोफाइसी, फेयोफाइसी और क्लोरोफाइसी की ही सेल वॉल में रहती है, और सिलिका इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैसिलारियोफाइसी एंड पायरोफाइसी. सो ओनली दीज फॉसिल्स आर फाउंड. और क्लोरोफाइसी में भी मोस्टली कारोफाइट्स की ही फॉसिल्स दिखने को मिलता है. Fossils according to family. Now fossils जो भी है we can see rhodophysi, chlorophysi, carophysi, chryso, फेयो एंड basilario, cyanophysi, सब में ही थोड़ा थोड़ा फॉसिल्स है. हम रोडोफाइसी में फॉसिल्स फाउंड आर बेंजियोमॉर्फा प्यूबिसेंस, आर्कियोलिथोथेम्नियन, डिस्टिकोप्लाक्स, मिलोप्सिया, टेरोफाइट. क्लोरोफाइसी की क्लैडोफाइट्स में जो फॉसिल्स है वो है स्पाइरोगाइट्स, उडोगोनियम, डैक्टिलोस्पोरा, यूलोट्रिक्स. कारोफाइसी में, जो कि क्लोरोफाइसी के अंडर में ही कारोफाइसी में है, कैटिलोकारा, स्टीलोकारा, पेलियोकारा, हेक्साकारा. ये जो इम्प्रेशन है ये स्टीलोकारा की इम्प्रेशन ऑन शेल. देन क्राइसोफाइसी we have dictyota and epeira. फेयोफाइसी में है फ्यूकस,
जो कि लिविंग भी है, और एक्टोकार्पस, ये दोनों ही फॉसिल फॉर्म में भी है और एक्सटेंट फॉर्म में भी है। Basilarophysi, diatoms, Stephanodiscus and Melosira. Cyanophysi, stromatolites, microcystis, Geocapsa, Aphanotheca, Review-laria. Mostly, these all the algae, they are found as algal mats in sedimentary rock. This is the geographical time scale, and we will be discussing about the fossils that are present in various time scale, eon-wise, era-wise, period and epoch-wise. Fossils according to geographical time scale. सबसे पहले प्रोटियोजोइक एओन को देख लेते हैं। इसमें हमको मिलता है पैरामेया, एंडहुईफाइटन लिनिएटम, ग्राइपेनिया, ग्रेमी फाइया। ये जो प्रोटियोजोइक फॉसिल्स है, ये मोस्टली डाउशेंटियो फॉर्मेशन में ही मिलता है। डाउशेंटियो यांटीज रिवर बेसिन में एक एरिया है जिसमें ये सारे जो रोडोफाइसी के मैक्रो फॉसिल्स है, these were found intermingled with other metazoan fossil in shale and dopestone stone formations. Phanerozoic eon की Paleozoic era Cambrian period. Stromatolites, Paleoaplysia, Crassipedoperus elegans, Kakabaica umbellata, Lithostroma and Volcalophycus. इसमें जो काकाबेकी अम्बेलेटा है, it is a prokaryotic algae, means cyanobacterial basically. This silicaceous algae is very important because इसकी जो मेटाबॉलिज्म है, ये it doesn't need oxygen, और ये ammonia rich water में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है इसकी, which is basically reflecting the ancient atmosphere. Paleozoic Ordovician. इसमें we get Hisciditis iovensis, Anatolipolia carbonica, Halicis, Receptaculites. ये सारे जो है ये डेसिक्लेडियन एल्गी है, जो कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, एंड दीज वर फाउंड इन मिक्स्ड विथ एनिलिड आर्थ्रोपोड. पिक्चर में है रिसेप्टाकुलाइट्स. रिसेप्टाकुलाइट्स दीज आर कैल्केरोस एल्गी. ये जो इसकी हेलिकल फॉर्म में ये जो दिख रहा है, ये अभी तो क्लॉकवाइज है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में भी आ जाता है. Paleozoic Ordovician, sorry, Devonian. Paleozoic Devonian में we find Proteotexites, Hungerfordia dichotoma, Dryadenia foliata, Enfeldia mutilata, Hexacara जो कि पिक्चर में है, Protosalvia and Chytocladus capitatus. All these Paleozoic Devonian, they are found in black shale. As we see, they are found in black shale. These are complex thalloid structures. Paleozoic Carbonaceous, Hortinella corallina, जो कि ये पिक्चर में है, Coninicpora, Nanopora, Donizella, Gymnocodium, Pseudovermiporellia. ये सारे we can get in Tarim Basin, that is in northwest of China. Though this is a landlocked area, but the presence of all these calcareous algae in the Tarim Basin indicates that
प्रीवियस जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में इधर कोई मरीन एक्वाटिक बॉडी या ओशन था, that is the Tethys Sea. So basically we can see that the study of corals, we can interpret the paleo marine aquatic bodies that are not present these days but they were present in the past. We can conclude that also. Then Paleozoic Permian. Paleozoic Permian period में we get Permocalculus, Gymnocodium, Gyroporelia. All these are calcareous algae, and as they are calcareous algae, naturally they will be present in marine, subtidal, intertidal region, in the tropical, subtropical area. We find it in Europe and Central Asia. The picture, this is Gyroporelia. Mesozoic Triassic. Mesozoic Triassic, Pyrenopodium and Diplopora, they are dasycladian algae, which are green algae, unicellular algae, and they are found in Europe, Central Asia, North and Central Asia, USA. These are found in shale rock. Mesozoic Cretaceous. Mesozoic Cretaceous, we get Botryococcus brownie, Pediastrum, Stegonema. All these are coralline fossil. But the most important thing is this Botryococcus brownie. This is found in fossil form as well as it is an extant species. Botryococcus brownie, this planktonic algae, causes algal bloom, but is very important from the algal fuel point of view. This is an important fuel crop in algal culture because 40% of its dry weight is fatty acids, and these algal oil obtained from it is very suitable for hydrocracking. So this Botryococcus brownie, this is a very good source of algal oil as well as because of this body has 40% or more of fatty acids. So जहाँ पे Botryococcus brownie मिलता है तो we can also infer oil deposits in and around that particular rock layer. Then we have Cenozoic Paleogene. Thus we have Trinacria ventricrosa. This Trinacria is a marine fossil, and as we see, it has got its name from this tri-skeleton shape. This is a diatom. Are sedimentary structures, and there are two types of stromatolite and oncolite. There are two types according to structure. One is the spongiostromata and other is the porostromata. So spongiostromata जो है उसकी जो सेलुलर माइक्रोस्ट्रक्चर वो क्लियर नहीं है, सो नेचुरली लेस इंफॉर्मेटिव, बट ये जो फॉसिल फॉर्म है वो उसमें ज्यादा वी गेट दिस स्पॉन्जियोस्ट्रोमाटा. इट हैज आउटनंबर्ड द पोरोस्ट्रोमाटा. द स्पॉन्जियोस्ट्रोमाटा they are less informative, and the porostromata, that is very much well preserved in the form of tubules. These tubules run parallel to each other and perpendicular to the algal mat surface. And these stromatolites we can find in the Precambrian and Phanerozoic period, mostly in the marine environment. लेकिन Eocene के टाइम के बाद से these are limited only to fresh water. अभी ये जो स्ट्रोमाटोलाइट, लिविंग स्ट्रोमाटोलाइट्स की वी कैन सी ऑल्सो इन शार्क बे ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विच इज एक्चुअली अ नेशनल पार्क, ये प्रिजर्व्ड एरिया. देन oncolites. Oncolites are
दीज आर सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन इसकी एक शेल रहती है, एक कोर रहती है। से कोई भी गैस्ट्रोपॉड, कोई भी बाइवल्व, ये कोई भी कैल्केरोस न्यूक्लियस रहती है जिसके ऊपर ये डिपोजिट लेयर दर लेयर डिपोजिट्स होते जाते हैं। These oncolites are also from cyanobacterial origin। सेम प्रोसेस, जहां पे जो ऑन्कोलाइट्स है वो एक लेयर के लेयर म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन करते वक्त मिनरल जो भी है सैंड रॉक, इसको सीमेंट करते हुए लेयर दर लेयर एक फॉर्मेशंस तैयार होते हैं। दे आर generally round in shape, they are not columnar like the stromatolites। These are the places where we get these oncolites। But these stromatolite and oncolite, they are mainly due to calcium carbonate and magnesium carbonate deposition। Stromatolite जो है much smaller in size compared to oncolite जो है much smaller in size compared to the stromatolites। ऑन्कोलाइट्स जो है इसकी मैक्सिमम जो डायमीटर है ये 10 सेंटीमीटर होता है, मैक्सिमम डायमीटर। We have rhodoliths। These rhodoliths, they are a mixture, they are of mineral, cyanobacteria and red algae। The cyanobacteria is actually not a bacteria, this is also an prokaryotic algae। So these rhodolith, they resemble the coral, but it is also not fixed to a place। ये क्या है कि एक न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियस के आसपास लेयर द लेयर डिपोजिट होते जाते हैं, and it keeps on tumbling till it reaches a certain large volume that it cannot tumble any further। That is why it is also called tumbleweed। This is also due to deposition of calcium carbonate, magnesium carbonate, mostly magnesium carbonate। We can find these rhodolith in these places, and the algae that are responsible are these algae। And these rhodolith, they are very durable to environmental disturbance, but they are very susceptible to ocean acidification। Why? This magnesium carbonate, which is the main precipitate, that is very much more dissolvable than calcium carbonate। अगर ocean acidification हो गया तो naturally the rhodoliths, they will be affected by ocean acidification। Now, concluding remarks. The techniques that are used to study the algae, what type of algae it is, what are the marine environment, and what are the genetic sequences, these are the time lapse photography। टाइम लैप्स फोटोग्राफी क्या है कि ये एक सिमुलेटेड फोटोग्राफी होता है जिसमें वी रिक्रिएट द एंशिएंट मरीन एनवायरनमेंट। इसमें जैसे हम देखते हैं ना कि फ्लावर्स की ओपनिंग, सीड की जर्मिनेशन, वो जो जितना स्पीड में दिखाते हैं दैट इज कॉल्ड द टाइम लैप्स फोटोग्राफी। ये एक्चुअली रिकॉर्ड होता है in a very slow space, but when it is shown, it is shown in a very high speed। Environmental scanning electron microscope, this is a blessing। Environmental scanning electron microscope, we can use it in situ, means जहाँ पे फॉसिल मिला है वही पर्टिकुलर एरिया में we will be getting, we can do this environmental scanning electron microscopy। And for that reason the specimen can be weighted, uncoated भी हो तो it can be done in a very fast pace of time। जो preparation method रहता है ACM के लिए वो इधर we can skip it। So naturally तो we don't get artifacts। So जैसे fossil मिला we can get the electron micrograph from the environmental scanning microscope in situ। अब उस फॉसिल को लेके हम अगर उसकी होल जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं
by use of shotgun sequencing. That is also a process of deciding कि जो फॉसिल मिला है वो कौन सी फैमिली की है. Then the cause of decline of fossils species. जो फॉसिल स्पीशी है वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर जो ज़्यादा हो जाते हैं तो it usually क्या it declines. Increase of acidity also is a cause of decline of these fossil species. Then most of the fossil fishes, they are calcareous in nature, and for that very reason these fossil species are harvested for use in various industry. Say for example diatomaceous, or it has got economic importance also. इस तरह से we instead of studying the fossil, it is mostly harvested for human use. With that I conclude. Thanks for listening. Please like and share. If you like the video, please subscribe also. Thank you.